Hello students, this is Gyan Ki Baat channel and today we start a new chapter in science which is chapter 2, the components of food. So this is our lecture 1 and in this chapter, in this top video we will talk about the first topic of this chapter, what do different food items contain. So let's start. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animal. These ingredients contain some components they are needed by our body. These components are called nutrients. So in these lines they are saying that in our food, in our dish we contain some component means some ingredients, और जो वो ingredients होते हैं उन ingredients को हम लोग nutritions कहते हैं. हमारे खाने में कुछ सामान, कुछ ingredients होते हैं जिनको हम लोग nutritions का नेम देते हैं. The major nutrients in our body are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So children, इसमें यहाँ पर जो nutritions होते हैं उनके नेम बताए हैं. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. इनको आप लिख लेना, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं. ये सारे carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals एक तरीके के nutrients ही हैं. ये सब हमारे food में अलग अलग quantity में present होते हैं. In addition, food contains dietary fibers and water which are needed by our body. So children, our body needs some amount of water and some amount of fiber which we get from different foods, and this we get from food. So जो ये सब ingredients होते हैं, जो ये 4-5 नाम के ingredients होते हैं, इन सब के अंदर एक फिक्स अमाउंट का water और फिक्स अमाउंट का fiber होता है जो हमारी बॉडी को needed होता है. Do all foods contain all these nutrients? So, क्या हर फूड में सेम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेम क्वांटिटी में होते हैं? Let's find out. With some simple methods, we can test whether cooked food or raw ingredients contain one or more these nutrients. So, हम कुछ experiments करके ये मालूम कर सकते हैं कि इन ingredients में कितने amount का water होता है और कितने amount का fiber होता है. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are similar to do as compared to test for other nutrients. So इसमें बताया है कि जब हम इनका टेस्ट करेंगे तो जो बाकी अभी आपके 6th क्लास में सिर्फ ये 4-5 न्यूट्रिएंट्स ही आए हैं. सो जो इनका अपन लोग टेस्ट करेंगे, ये बाकी जो अदर विटामिन्स वगैरह और जो मिनरल्स होते हैं उन सब के तरह ही सेम होते हैं. सेम इनका टेस्ट करा जाता है सेम इंस्ट्रूमेंट से. For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. So अब इसमें बताया है कि how to do this experiment. इसमें अपन को एक टेस्ट ट्यूब में कुछ अमाउंट का आयोडीन लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है और कॉसेटिक सोडा लेना है. फिर उसके बाद try these tests on cooked food item as well as raw material. Now these tests are should be carried on cooked food and fried foods. Table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. You can record the observation from the above table which was given above activity 2. You can conduct the test either with these or any other available food item. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. तो स्टूडेंट्स, एक बात का केयरफुली रिमेंबर रखना कि आप जब इनको कर रहे हो तो जो वो केमिकल वाला फूड होगा उसको आप बाय मिस्टेक ईट ना कर लो. If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रेडीमेड पहले से प्रिपेयर फूड नहीं है तो आप अपने टीचर से बोल के वो सेम प्रिपेयर करवा सकते हैं. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. तो स्टूडेंट्स, we are gonna first see that if carbohydrates are present or not. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in a food are in the form of starch and sugars. So students, in class 6th they were only said that carbohydrates are of 2 types, starch and sugars, but in higher classes you will learn that carbohydrates are of many types. We can easily test if a food item contains starch. So by doing a activity we can find that whether a substance contains carbohydrates or not. So we'll do activity 2 in the later coming videos. So after this we'll do our next topic, test for protein. Until then, stay safe, stay learning. Do not forget to like, share and subscribe our channel.